नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निकांत इंस्टीट्यूट में। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। चलिए सीधे इस टॉपिक पर आते हैं। एक विशाल सिलेबस और एक बड़ा एकेडमिक चैलेंज, बिना थके इस पहाड़ को आखिर कैसे पार किया जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कंसिस्टेंसी के आधार को डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो अपने करियर के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सिलेबस इतना बड़ा कि सिर्फ किताबों का ढेर देखकर ही पसीने छूटने लगे। ये एक ऐसी स्थिति है जहां लगता है कि वक्त मुट्ठी से फिसल रहा है और पढ़ने को एक समुंदर बचा है। धड़कनें तेज होती हैं और घबराहट में अक्सर गलत फैसले लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दिमाग को शांत रखकर इस विशाल सिलेबस को कॉन्कर कैसे किया जा सकता है। शुरुआत में बिल्कुल वही हुआ जो आमतौर पर ऐसी पैनिक वाली स्टेट में होता है। एक सीधा सा प्लान बनाया गया, दिन में पूरे 15 घंटे की पढ़ाई। देखने में लगता है कि मेहनत बढ़ानी है तो घंटे बढ़ा दो, लेकिन सच्चाई यह है कि एक बहुत बड़ा जाल है। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही इसका नतीजा बिल्कुल साफ हो गया। वो स्टूडेंट बुरी तरह बर्नआउट का शिकार हो गया। दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, फोकस 0 हो गया और पढ़ाई से मन ही उठने लगा। 15 घंटे का लगातार प्रेशर सच में किसी को भी तोड़ने के लिए काफी होता है। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां पूरी गेम बदल दी गई। एक नई क्लैरिटी के साथ ये समझ आया कि गधे की तरह लगातार मेहनत करने और सही दिशा में स्मार्ट वर्क करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ थी वो 15 घंटे की पढ़ाई जो सिर्फ थकान, स्ट्रेस और बर्नआउट दे रही थी, और दूसरी तरफ था एक बिल्कुल नया रास्ता, सिर्फ 3 घंटे का डीप वर्क जहां दिमाग पूरी तरह से एक ही चीज पर फोकस कर सके। उस वक्त एक ऐसा वादा किया गया जो वाकई गेम चेंजर साबित हुआ। मैं 15 घंटे नहीं, सिर्फ 3 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। यह सिर्फ एक ऑर्डिनरी लाइन नहीं थी, यह पढ़ाई के पूरे सिस्टम को रीसेट करने का एक बड़ा फैसला था। पढ़ाई के घंटों की गिनती कम करके उसकी क्वालिटी को सबसे ऊपर रखने का यह सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। तो आप देखते हैं कि यह सक्सेस फॉर्मूला जमीन पर उतरा कैसे। इस नए माइंडसेट को हकीकत में बदलने के लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क बनाया गया। एक ऐसा सक्सेस फॉर्मूला जिसने उस डरावने पहाड़ जैसे सिलेबस को एक आसान सीढ़ी में तब्दील कर दिया। इस फॉर्मूला में कुछ बेहद सटीक और सिंपल स्टेप्स थे जिन्होंने मिलकर इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। अब जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है एब्सोल्यूट फोकस की ताकत। डीप वर्क का मतलब सिर्फ चुपचाप किताब खोलकर बैठना बिल्कुल नहीं था। इसका असली मतलब था ना कहने की हिम्मत। पढ़ाई के उन 3 घंटों में फोन को, सोशल मीडिया को, दोस्तों के मैसेजेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना। ये वो 3 घंटे थे जहां दिमाग सिर्फ और सिर्फ नए कॉन्सेप्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। इसे कहते हैं असली डीप वर्क। डीप वर्क होने के बाद अगली बारी आती है एक्टिव रिवीजन की। और ध्यान दीजिए, ज्यादातर पढ़ाई सिर्फ हाइलाइटर लेकर किताबों को कलर करने तक सीमित रह जाती है, लेकिन यहां रिकॉल मेथड का जादू इस्तेमाल किया गया। मतलब सिर्फ पैसिव रीडिंग नहीं, बल्कि जो कुछ भी अभी समझा है किताब बंद करके उसे बिना देखे एक ब्लैंक पेपर पर उतारने की कोशिश करना। ये टेक्निक दिमाग को स्ट्रेच करती है और नॉलेज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक करने का सबसे पावरफुल तरीका है। ये सीक्वेंस एकदम परफेक्टली दर्शाता है कि दिन का सिस्टमैटिक शेड्यूल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले उस बड़े सिलेबस को छोटे डुएबल हिस्सों में तोड़ना। रोज सिर्फ एक टॉपिक मास्टर करने का टारगेट सेट करना। दूसरा, उस पर एकदम लेजर फोकस के साथ डीप वर्क करना। तीसरा, उस रिकॉल मेथड के जरिए अपने दिमाग का टेस्ट लेना। और चौथा, आत्मविश्वास। दूसरों से आगे निकलने की रेस नहीं, बल्कि कल के अपने ही रिकॉर्ड को आज तोड़ने का जुनून। यही वो डेली ग्राइंड है जो असली माजिक क्रिएट करता है। और इस डिसिप्लिन का नतीजा बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। जिस दिन फाइनल एग्जाम था, जहां एक तरफ बाकी सारे लोग पैनिक अटैक और टेंशन से जूझ रहे थे, ये प्रिपरेशन एकदम शांत और रिलैक्स थी। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम से एक रात पहले सिलेबस को कंप्लीट करने का कोई अनरियल प्रेशर था ही नहीं। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके वो एवरेज जैसा सिलेबस कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। और नतीजा ये निकला कि सिर्फ एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ, बल्कि टॉप रैंक भी हासिल की गई। तो क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि आखिर इस पूरी ब्लूप्रिंट से हमारे लिए क्या सीखने को है। ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एकेडमिक कंसिस्टेंसी की एक ऐसी प्रैक्टिकल प्लेबुक है जिसे किसी भी एग्जाम में अप्लाई किया जा सकता है। चलिए इन एक्शनेबल लेसन्स को एक एक करके ठीक से समझते हैं ताकि इन्हें तुरंत यूज किया जा सके। लेसन नंबर 1, क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को हराती है।
डेस्क पर 10 घंटे बैठे रहना, जहां दिमाग इंस्टाग्राम और ख्यालों के बीच झूल रहा हो, लिटरली वक्त बर्बाद करना है। इसके मुकाबले सिर्फ 3 घंटे की सॉलिड पढ़ाई, जहां ध्यान 1 इंच भी इधर उधर ना भटके, वो 10 घंटे के बराबर का रिटर्न देती है। डेस्क पर बिताए गए घंटे नहीं, बल्कि लर्निंग के घंटे काउंट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है रिवीजन इज किंग। इंसानी दिमाग नई इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी फ्लश आउट कर देता है। इसीलिए ये 24 घंटे का रूल बिल्कुल पत्थर की लकीर होना चाहिए। जो भी आज पढ़ा है उसे अगले 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार जरूर रिवाइज करना ही है। अगर ये 24 घंटे की विंडो मिस हो गई तो समझ लीजिए पिछले दिन की आधी मेहनत पानी में चली गई। तीसरा नियम, और ये काफी पॉपुलर टेक्निक है, 50-10 रेशो। लगातार बिना उठे पढ़ते रहना ब्रेन को थकाकर फ्रीज कर देता है। इसीलिए 50 मिनट पूरी फुल पावर स्टडी और उसके बाद ठीक 10 मिनट का कंप्लीट ब्रेक। इस 10 मिनट में फोन नहीं देखना है, बस स्ट्रेच करना है या पानी पीना है। ये ब्रेक दिमाग को रिफ्रेश करता है ताकि अगले 50 मिनट के सेशन के लिए वो वापस 100% चार्ज हो सके। और आखिरी सबसे पावरफुल सबक, कंसिस्टेंसी। एक ही दिन अचानक जोश में आकर 20 घंटे पढ़ डालना और फिर अगले 4 दिन तक किताबें खोलकर भी ना देखना, ऐसी इराटिक पढ़ाई किसी को टॉपर नहीं बनाती। इसकी जगह बिना छुट्टी किए हर रोज स्टेडिली 4 घंटे पढ़ना गेम को पूरी तरह पलट देता है। रोजाना का स्टेडी एफर्ट उस लास्ट मिनट वाली पैनिक क्रैमिंग को आसानी से हरा देता है। ये लाइन हमेशा याद रखने वाली है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है अगर टिके रहें। ये कोट एकेडमिक इंड्योरेंस के पूरे एसेंस को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। पढ़ाई एक स्प्रिंट नहीं, पूरी एक मैराथन है। अंत में वही आगे निकलता है जो फील्ड पर टिका रहता है और रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने टारगेट की तरफ बढ़ता रहता है। अब छोड़ते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। इस हाइपर कॉम्पिटिटिव माहौल में ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जहां स्टूडेंट्स आज इन यूनिवर्सल टेक्निक्स का एक्चुअली फायदा उठा रहे हैं? मेथड्स चाहे कितने भी पुराने या सिंपल लगे, इनकी असली मैजिक इनकी एग्जीक्यूशन में छुपी है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से पढ़ाई के इस आर्किटेक्चर की गहराई काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। Hey everyone, welcome back to The Explainer. So today we're diving into something that is absolutely foundational. We're looking at the architecture of academic consistency. We've got this amazing story from our source material about a student who literally completely flipped his entire approach to studying. So, if you've ever felt totally buried by academic pressure, well, stick around because we're going to unpack exactly how he fixed it. Be honest with me for a second. When you look at your syllabus, does it absolutely terrify you? Because look, we've all been there, right? You get that massive packet on day one, or you download this huge PDF for a career-defining exam, and you just stare at it. And it feels less like a document and way more like an unscalable mountain. The panic just instantly sets in. You start running the math in your head, like, okay, how many pages per day do I need to read? How many sleepless nights is this going to take? And it's just paralyzing. So that brings us to section 1, the 15-hour study mistake. Let's call this a cautionary tale. All right, let me introduce you to the main subject of our source material. So this guy is facing down a terrifyingly huge syllabus, and he falls straight into that toxic hustle culture trap. His master plan? Cramming for 15 hours a day. Wake up, study, eat while studying, study some more, sleep for maybe a few hours, and repeat the whole shebang. But guess what? This extreme approach completely backfired. It led to severe exhaustion, and he completely lost his focus in just 2 days. Literally 2 days. The pace was frantic, it was overwhelming, and honestly, totally unsustainable. His mind was wandering, his body was giving up, he was putting in the crazy hours, but zero actual learning was happening. He clearly needed a pivot, which leads us to section 2, the 3-hour success formula. Deep work wins. Okay, so our student realized super fast that this whole quantity over quality thing was failing miserably. He actually stopped, took a step back, and made a really radical decision. He decided to study for only 3 hours a day. But here's the kicker: 0 distractions. It is such a stark contrast when you think about it. On one hand, you have 15 hours of chaotic, exhausting pseudo-studying, the kind where you're staring at a textbook, but you're actually just thinking about what's for lunch or scrolling on your phone. And on the other hand, you've got 3 hours of pure, unadulterated deep work. Calm, measured, intentional. He traded the mere illusion of productivity for actual intense focus.
So you're probably wondering, how exactly did he pull this off? Well, the source text breaks it down into 4 tangible tools. Step 1 was small goals. He stopped staring at the giant, terrifying syllabus and just broke it down into tiny, digestible chunks. His only goal was to master one specific topic per day. Step 2, the power of no. And this is absolutely huge. During those 3 hours, he ruthlessly said no to his phone. No social media. No compromises whatsoever. Step 3 was active revision, which we are definitely going to dig into more in just a second. And step 4, self-belief. Whenever people around him started panicking and complaining about how hard the exam was, he just tuned it out. He wasn't competing with them. He was only trying to beat his own record from the day before. Let's actually isolate step 3 for a second, because it's a super concrete, scientifically backed tactic. It's called the recall method. Basically, it's attempting to write down everything you just learned without looking at your notes. Our student didn't just passively reread textbooks and highlight random paragraphs. Because, passive reading kind of tricks your brain into thinking you know the material when you really don't. Instead, he forced his brain to actively retrieve the information. Is it harder? Oh, for sure. But it is literally the best way to cement that knowledge straight into your long-term memory. So what actually happens when you combine small goals, deep work, active recall, and just unshakable self-belief? Well, he completely ignored the whole myth that the exam was impossible to pass. By focusing strictly on beating his own pass record, he just climbed that mountain bit by bit, day by day. And the payoff? Man, on the day of the exam, while everyone else in the room was completely drowning in panic, he was totally calm. He knew exactly what he'd built up in his head. And he didn't just pass the exam, he topped it. All right, let's pivot from the story to a practical framework that literally anyone can use. Section 3, the 4 rules for exam success. Rule number 1, quality over quantity. This honestly bears repeating as the ultimate golden rule. 10 hours of just sitting at your desk half-heartedly flipping through pages while checking your notifications, that is vastly inferior to just 3 hours of absolute laser-like dedication. We really need to stop counting the hours we just sit at a desk and start counting the hours of true, deep focus. Moving on, Rule 2 is absolutely crucial. Revision is king. The source material makes this crystal clear. Whatever new material you study today, you have to review it within a strict 24-hour window. Right? It all comes down to the forgetting curve. If you learn something on Monday and you don't even glance at it again until Sunday, your brain has basically already tossed most of it in the trash. Reviewing it within that first 24 hours locks it in. It sends a massive signal to your brain saying, hey, this is really important. Save this. Then we have Rule 3, which is beautifully simple, the 50-10 rule. This is your ultimate burnout prevention tool right here. Because look, you need breaks. The human brain literally cannot maintain peak concentration forever. So the strategy is to study intensely for 50 minutes and then forcefully step away for a 10-minute break. Actually walk away from the desk, stretch, grab some water. Just give your brain a minute to process everything it just absorbed. Studying continuously without a break is actually working against you. And that perfectly sets up our final rule, consistency. Think about the difference here. Imagine cramming for 20 hours in one massive, panic-fueled day right before a test. Now compare that against a steady, manageable 4 hours every single day over a longer period. Sure, erratic cramming might help you scrape by on a tiny quiz, but for massive, career-defining exams, it's going to fail you. Steady, daily, consistent effort creates this compounding effect that yields massive results. Which brings us to a really powerful core message from our source material, and it essentially translates to this. Success isn't something that happens in a single day, but it definitely happens one day as long as you persist. That's the real architecture of academic consistency right there. It's not about some overnight miracle. It is simply about showing up, leveraging that 3-hour deep work formula, actively recalling what you read, taking smart breaks, and just not quitting. If you stay on the path, the results are going to follow. So, I'll leave you with this. What exam are you preparing for? What is your mountain right now? Whether it's a huge university entrance exam, a massive professional certification, or honestly just a really tough class final. How are you going to apply these 4 rules starting today? Are you going to keep falling into that